पहली बार आए हैं कश्मीर, और जैसे बुक्स में पढ़ा था ना कि कश्मीर जन्नत है, तो जन्नत है, वी अग्री टू इट। बहुत अच्छा है, बट हम लोग वेट कर रहे थे कि अजय देवगन को हम मिले, बट 5 मिनट पहले शायद निकले हैं वो यहाँ से, सो मिलते तो और मज़ा आता। हालात हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमको डर लगा या ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यार से खिलाते हैं, खाना वाना बहुत अच्छा है, सो ओवरऑल वी हैव एंजॉयड। साउथ की तरफ से यहाँ मूवी बन रही है, ये भी अच्छी बात है, होने चाहिए ऐसे, मतलब इवेंट्स होने चाहिए कश्मीर में, इससे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते हैं कश्मीर के हालात। The film name is Kushi, and casting is Vijay Devarkonda and Samantha Rutuprabhu. And we started shooting 1 month earlier, and it's almost we are going to finish in couple of days. We shot at Sonmarg, we shot at Pahalgam, and we shot at Srinagar, and we shot at so many exotic places in the Kashmir. In reality, Kashmir is one beautiful place, as people also very friendly, and the locations are very friendly. We shot almost 30 days. I personally or my unit or never faced even single bad incident or unfortunate incidents. We are like every day, it's like any other Indian place like Ooty, Kodaikanal, like that only, and more beautiful than any place else. So whatever I heard about the Kashmir people and the whole perception, I changed completely. That from the drivers to from the citizens, army people, and everybody are very very friendly, and every location is friendly, and it was very excited to mingle with all the people, different cultures, having Kashmiri food and all. No, this is the one best place to shoot ever.